Hello dear students, you are all welcome to the e-learning class in chemistry. Today we will be discussing about the organic chemistry for 12th standard students, and this belongs to the unit 11, the last part, that is ether. You have already read alcohols and phenols. So, the last part is ether, a small chapter. Today we will discuss everything about ether. So, what are ethers? How do you know that this is ether? And what are its importance? What are its uses, applications? Dear students, ethers are liquids most widely used as a solvent in industry, in laboratories, especially in analytical or research laboratories. It is such a solvent. Ethers are such solvents which can dissolve almost all types of organic compounds. They are very good solvents for fats and esters, and ethers are widely used for extraction of different organic compounds from aqueous solution by solvent extraction process. Very useful so far as industrial use, research purpose, in a laboratory, all these places ethers find its importance. So, today we will discuss about the classification, nomenclature, isomerism of ethers, preparation, physical properties, chemical properties, and some questions. So, what are ethers? Ethers are the class of organic compounds like phenol and alcohol. It contains O, oxygen as a functional group, and you know oxygen is divalent. So, to each side of the oxygen, the groups bonded may be alkyl, similar or dissimilar. They can be aryl or can be combination of alkyl or aryl groups. Yani, ethers are the class of organic compounds in which the functional group O is bonded to similar or dissimilar alkyl groups or aryl groups. These are otherwise called as anhydride of alcohols. If you take two alcohols ROH, and if you remove water, OH of one alcohol and H of another alcohol, means water is lost, then ROR. Otherwise, it is called as anhydride of alcohol. So, as I told, it is a solvent that widely used in industry and in a laboratory, because they dissolve almost all types of organic compounds. What is the general molecular formula? ROR dash. Here I am making very clear, it is not limited to ROR dash, it cannot be called as like this. Here one thing is, this is the functional group, this is your functional group. R can be equal to R dash, दोनों बराबर भी हो सकते हैं. R or R dash can be dissimilar, but R dash cannot be H. You can also have here aryl groups. R can be your aryl groups or alkyl groups. Okay. So, best example is your dimethyl ether. Diethyl ether, this is largely used in a laboratory and in industry. You can have also methyl ethyl ether. So, these are different types of ethers. Okay. You can have also phenyl group like C6H5, OCH3, better is known as anisole. We will study about this. So, these are the different types of different examples of ethers. Now, let us do the classification. Ethers are classified into four categories, maybe simple ether, mixed ether, cyclic ether or crown ether. We will not touch upon the cyclic ethers or crown ethers for sake of your knowledge, for sake of your information. I am giving this. What are simple ethers? Simple ether means the ether that contains similar alkyl groups और aryl groups. ऑक्सीजन के दोनों साइड में अगर जो दो ग्रुप है अगर वो बिल्कुल
एक ही जैसा ग्रुप है तो उसको कहेंगे सिंपल ईथर. लाइक योर डाइमिथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, दे आर ऑल सिंपल ईथर्स. ठीक है. व्हाट आर मिक्स्ड ईथर? इफ द ईथर कंटेन्स टू डिसिमिलर अल्किल और अरिल ग्रुप्स. जैसे मिथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, थर्ड वन, एंड ए मिथाइल फिनाइल ईथर और anisole, they are all mixed ethers. Another is a cyclic ether. You see, you look into the PPT, cyclic ether means the oxygen forms or oxygen becomes a part of the ring. If it is a three-membered ring, we call it epoxide. It is also called as epoxide, more reactive. Angle of strain is there. So, there it is name is oxygen. You can have also four-membered ring with the oxygen at one corner or member of a ring, it is called oxygen. Another is a crown ether. It is a phase transfer catalyst. We will not go out to that part. Okay. Next is your nomenclature. How to do the naming? You know the general molecular formula I have already discussed. Functional group is your O, means alkoxy. Simple O नहीं कहेंगे, उसको alkoxy कहेंगे, because it is always associated with the alkyl groups or aryl groups. Common name is G. देखो ये कॉमन नेम क्या हो सकती है? कॉमन नेम ऐसा भी हो सकता है, ये अगर इफ यू हैव टू सिमिलर ग्रुप्स देन डाइअल्किल ईथर. इफ डिसिमिलर अल्किल ग्रुप्स, alkyl alkyl ether means alphabetically the alkyl which name comes first, we will write it first, then another. So, इसलिए we call it alkyl alkyl ether. It does not have any suffix. It does not have any suffix. So, what will be the IUPAC name? ध्यान रखना यहाँ पे IUPAC name क्या होगा ना, अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन. ये बात थोड़ा ध्यान रखना. अल्कोक्सी अल्केन मतलब एक ही अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ रहेगा, अल्कोक्सी, और दूसरा अल्किल ग्रुप उससे बनेगा अल्केन. सो इसका नाम होगा, कॉमन नेम होगा क्या उसका? डाइमिथाइल ईथर. डाइमिथाइल ईथर हम कह सकते हैं कॉमन नेम डाइमिथाइल ईथर. और IUPAC नेम क्या होगा? मिथाइल ऑक्सी, मिथोक्सी मीथेन, मिथोक्सी मीथेन. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर यहां देखेंगे हम ये वाला, यहां पे मिथाइल और इथाइल, बात आती है कि ऑक्सीजन किसके साथ रहेगी, मतलब सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन कौन बनेगा. तो याद रखो जो छोटा ग्रुप है ना उसके साथ हमेशा वो ही रहेगी. तो मिथाइल ऑक्सी मिथोक्सी, ये जो बड़ा ग्रुप इससे अल्केन बनाएगी. तो क्या होगा नाम? IUPAC कॉमन नेम तो जानते हो, इथाइल मिथाइल ईथर, ई तो ई कम्स फर्स्ट, इथाइल मिथाइल ईथर, और मिथोक्सी इथेन, मिथोक्सी इथेन. ऐसे ही तुम्हारा नाम होगा. ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना. मैंने कुछ भी दिया एग्जाम्पल, और किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? Let us discuss structure of a ether. It is similar to your alcohol, ROH, or water कह सकते हैं. Similarly, your ether has also similar structure. Means oxygen contains two lone pair of electrons, two lone pair of electrons. sp3 hybridization, because it has a two bond pair of electrons, two lone pair of electrons, means there are four electron pairs. So sp3, and a geometry is tetrahedral. Shape is just like alcohol, it is bent or inverted V, inverted V, inverted V और angular भी कह सकते हैं. लेकिन बॉन्ड एंगल यहाँ पे it is more than normal tetrahedral angle because of a steric repulsion caused by bulky alkyl group. यहाँ पे अल्कोहल में तुम्हारा रहा 108 डिग्री के आसपास, यहाँ पे तुम्हारा 104 डिग्री, 104.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा 111 डिग्री बिकॉज ऑफ अ स्टेरिक रिपल्सन. इसीलिए ये बात बहुत ही अहम है, याद रखना. ठीक है. नेक्स्ट इज योर आइसोमेरिज्म. सो ईथर शोज टू इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म. पहला आइसोमेरिज्म तो मैं अल्कोहल में पढ़ा चुका हूं कि द फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर इज योर अल्कोहल. सो डाई मिथाइल ईथर कैसे लिखोगे? एग्जाम में पूछा गया, और इफ यू आर आस्क्ड सच क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शनल आइसोमर डाई मिथाइल ईथर,
सो देखना कि यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन से अल्कोहल बना लो CH5OH। व्हाट इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का अल्कोहल बना लो, प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपान 1 ऑल हो सकता है, 2 ऑल भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। मेटामरिज्म भी अनदर इंपॉर्टेंट आइसोमरिज्म आल्सो शोन बाय ईथर। व्हाट इज मेटामरिज्म? सेम molecular formula, different structural formula, they differ from each other in the nature of alkyl group around polyvalent functional group। O की दोनों साइड में अल्किल ग्रुप को हम कैसे कितने तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि डाईइथाइल ईथर, देखो डाईइथाइल ईथर, इसी साइड में 2 कार्बन, उसी साइड में 2 कार्बन, हम कैसे लिख सकते हैं? मान लो मेटामरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है, वही रहेगा। इस साइड में 2 थे, उसी साइड में 2 थे, हम क्या कर सकते हैं? एक ही साइड में 1 को रख के दूसरे साइड में 3 कार्बन को रख सकते हैं। मतलब मिथाइली एन प्रोपाइल ईथर, एन प्रोपाइल को भी हम लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल भी कर सकते हैं। सो डाईइथाइल ईथर, उसका मेटामर बनता है तुम्हारा मिथाइली एन प्रोपाइल ईथर भी हो सकता है, और मिथाइली आइसोप्रोपाइल ईथर भी हो सकता है। ये बात ध्यान से याद रखना। तो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन अल्कोहल पार्ट 3 from alcohol, you know when alcohol is heated with the concentrated sulfuric acid at 140 degree Celsius, very important, primary alcohol की बात मैं कह रहा हूँ, I am not talking of a secondary or tertiary alcohol, because secondary and tertiary alcohol they are more reactive, they can undergo elimination। when primary alcohol is heated with the concentrated sulfuric acid at 140 degree, not 160, very important। so H and OH of one alcohol, H of another alcohol, you just learn how to write। I am not giving you the mechanism, मैं mechanism discussion नहीं कर रहा हूँ, बस तरीका बता रहा हूँ कैसे तुम लिखोगे कौन सा ईथर बनने जा रहा है। so this is ether। you cannot have R cannot be secondary or tertiary। if you take secondary alcohol, अगर ये सोचते होंगे कि मैं यहाँ पे डाई secondary, suppose if I want to prepare like this, ये नहीं हो सकता है इसी प्रोसेस से। if you want to prepare डाई tertiary alcohol, ये नहीं हो सकता, इसका ये लिमिटेशन है। सिर्फ और सिर्फ ईथर तुम्हारा जो बनेगा ये सिंपल ईथर बनेगा, मिक्स्ड ईथर भी नहीं बनेगा। इफ यू टेक डिसिमिलर अल्कोहल, कहोगे तो ये तो 2 मॉलिक्यूल हो गया, तो ये कंबाइन हो गया। इफ यू टेक R and R डैश, you will not get single ether, you will get mixture of ether, ROR, R dash OR dash plus ROR dash, ये गड़बड़ी हो जाएगी। so we cannot prepare mixed ether, we cannot prepare secondary or tertiary ether, only the alcohol used should be primary। ठीक है। next is from alkyl halide, you know from alkyl halide in halo alkane you have already read that when alkyl halide, preferably bromide or iodide, is heated with is dry silver oxide AgO plus XR, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो अल्कोहल ही मिलेगा। तो यहाँ पे रहा Ag, तो तुम्हारा ये AgX हमको यहाँ मिल जाएगा ROR प्लस 2AgX। ये रहा अनदर इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस। इट इज सच ए वर्सटाइल मेथड। बाय दिस मेथड यू कैन प्रिपेयर वाइड वेराइटी ऑफ ईथर्स। सिंपल ईथर भी बना सकते हैं और मिक्स्ड ईथर भी हम बना सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? व्हेन alkyl halide is treated with सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड, विलियमसन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करने वाला हूँ, उसका लिमिटेशन वगैरह सब डिस्कशन करेंगे। विलियमसन सिंथेसिस व्हेन सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड इज हीटेड विथ और ट्रीटेड विथ
your alkyl halide, we get ether. We get ether. लेकिन यहाँ बात इतने से खत्म नहीं होती है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है. जैसे कि you cannot take alkyl halide as vinyl और aryl. ये लिमिटेशन है, याद रखना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्किल हालाइड क्या होगा, क्या नहीं होगा, और क्या लेंगे, क्या नहीं लेंगे, और ये भी क्या होगा. In Williamson synthesis, we see one is alkoxide, another is alkyl halide. But there are number of restrictions. उसका बहुत ही फायदा भी है और लिमिटेशंस भी है. जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पे मैंने R डैश लिख दिया, तो यहाँ पे R डैश और R प्राइम, ठीक है, प्लस सोडियम हालाइड हम लिख सकते हैं. तो देखो R डैश और R प्राइम, ये जो अल्किल हालाइड ये हमेशा तुम्हारा प्राइमरी अल्किल ग्रुप होना चाहिए. इट कैनॉट बी सेकेंडरी और टर्शियरी, ये नहीं हो सकता है. दिस कैनॉट बी सेकेंडरी और टर्शियरी बिकॉज इलिमिनेशन की खतरा है. लेकिन R कैन बी, और R डैश कैनॉट बी योर आरिल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप बिकॉज दे आर least reactive. You know, aryl halides are less reactive or least reactive. Similarly, vinyl groups are also less reactive. So R dash cannot be secondary or tertiary, also cannot be phenyl or vinyl. R होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. So R can be और फिनाइल हो सकता है, अल्किल ग्रुप भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है. देखो एग्जांपल देखो. सो इफ यू टेक हियर सोडियम इथॉक्साइड, कई बार ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया, तो व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम इथॉक्साइड इज ट्रीटेड विथ इथाइल ब्रोमाइड. ये तो सिंपल इथर है. सो वी गेट डाई इथाइल ether. If you want to prepare tertiary ether, so then you have to take this part, alkoxide part, as tertiary alkyl group. Here you have to take tertiary. Suppose if I want to prepare C tertiary butyl methyl ether, then I have to take tertiary butoxide. Then I have to treat it with ethyl bromide. Then I will get tertiary butyl ether. So this is tertiary CH3, CH3, CH3. If I take tertiary butyl bromide and react it with sodium ethoxide, theoretical तो ये possible है, लेकिन ये नहीं होगा. So this is the limitation. You cannot take R dash, the alkyl halide, as aryl or vinyl or secondary or tertiary. But here you can take alkoxide, you can take primary, secondary, tertiary, phenyl, vinyl आप ले सकते हैं. ठीक है. और इसका एक लिमिटेशन है. क्या लिमिटेशन है? You cannot prepare by this method, you cannot prepare your di secondary alkyl ether, ये नहीं हो सकता है. डाई फिनाइल ईथर भी नहीं बन सकता है, और डाई टर्शियरी अल्किल ईथर भी इसी प्रोसेस से हम नहीं बना सकते हैं. So these are the ethers cannot be prepared by this method. These are limitations. Otherwise, it is very useful for preparation of large varieties of ethers, be it simple ether or mixed ether. लेकिन एग्जाम में CHSE के एग्जामिनेशन के जहाँ तक सवाल है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया विलियमसन सिंथेसिस. व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस? सिंपली लिखना. ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया. ये सिंपल लिखना, व्हेन अल्किल हालाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड, इट गिव्स यू ईथर.
इथाइली सोडियम इथोक्साइड और इथाइली ब्रोमाइड, बस इतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट विल वी गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज। यू नो all the ethers are liquids. They are volatile liquids, low boiling liquids, and they are also slightly polar liquids. And ethers up to C3, they are very slightly soluble in water because they are capable of forming intermolecular hydrogen bonding with water. Only 80% is soluble, and further the solubility decreases. Boiling point is lower than alcohols, aldehydes and ketones, also alkyl halides. Boiling point is very low. And as I have told you, this is used as a very excellent solvent for fats and esters. ठीक है, chemical properties, ethers are almost inert like alkanes, because in alkane you see there are only sigma bonds which are very difficult to break, they need more energy. Similarly in ether, O is there, two alkyl groups are there, so very difficult to break the bond. It is less reactive than alcohol and phenol. If you compare alcohol phenol with ether, same O is there, but in phenol there are active sites like hydrogen and benzene ring. In alcohol, OH is the active site, but here we do not have any proper active site. But under a drastic condition, it shows some reactions, like 4 types of reactions we will discuss. Reaction with alkyl group, reaction with ethereal group, ऑक्सीजन के साथ, पहला अल्किल ग्रुप के साथ, दूसरा इथर के साथ क्या क्या रिएक्शंस, इथरियल ओ ग्रुप के साथ, तीसरा कुछ रिएक्शंस डिस्कशन के मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटती है, दैट इज थर्ड कैटेगरी. एंड फोर्थ, इन केस ऑफ aromatic anisole, we will discuss about the ring reactions with the rings. So let us discuss about reaction with R group. R means alkyl group. alkyl group के साथ जब रिएक्शन होता है दो कंडीशंस में, देखो very important in a light reaction and also in a dark reaction. In a light reaction and in a dark reaction, I am taking diethyl ether. जरा ध्यान देना इस रिएक्शन से मैं क्या कह रहा हूं. अगर if you react it with chlorine in dark, because in dark the concentration of free radicals are less, so we get mono alpha, this is alpha dash, so it is called alpha dash substitution. So if you add 2 molecules of chlorine, you will get Cl, here O, CH, Cl, CH3. So this is alpha dash disubstitution. If you react the same ether with chlorine in presence of sunlight, all the alpha and beta, this is alpha, this is beta, all the alpha and beta hydrogens are easily replaced because large number of free radicals, chlorine free radicals are generated in the presence of light, and you get deca. You know, all the hydrogens are replaced by chlorine groups, so we get product like this. So this is very important to distinguish how does ether react with the halogen in the presence of light and in the absence of light. So this part is only reactions with the R group. So this reaction clearly shows the reaction only takes place with the R group. ऑक्सीजन का कोई लेना देना इसी रिएक्शन में नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद इथेरियल. यू नो इथर, इन इथर ऑक्सीजन कंटेन्स 2 lone pair of electrons. 2 lone pair of electrons इसके पास है, so it can act as a base, so it can react with any acidic substance or Lewis acid like BF3, you know, Lewis acid, so it can donate this electron pair and form a complex. So this clearly shows that it is basic in nature. Also ether can react with your, because it contains lone pair of electron, it can react with acid, so it is a base, so it is acid, and it can also form your salt. It can also form your salt. So from these reactions it is clear that ether has some basic character, and that basic character is due to presence of lone pair of electron, and this reaction is only with the oxygen part. Next is another important reaction, very important reaction, that reactions with that involves
क्लीवेज ऑफ सी एंड ओ। कुछ रिएक्शंस हम डिस्कशन करेंगे जिससे तुम्हारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा। ऑर्डिनरी कंडीशंस में टूटने वाला नहीं है, इन ड्रास्टिक कंडीशन ये बॉन्ड टूटेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन, reactions involving cleavage of carbon oxygen bond in ether. In first two reactions we have discussed the reaction with the alkyl group and with the oxygen. Third is most important. As you know, these are less reactive by nature, but here under certain conditions the bond between carbon and oxygen breaks. Who are the reagents? Remember, three reagents. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी तोड़ सकती है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी तोड़ सकती है, PCl5 एंड ए हालोजन एसिड्स लाइक HI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसी चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। सो देखो, व्हेन ईथर इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, it undergoes hydrolysis and produces alcohol. If you take simple ether, ROR, if you take simple ether, primary alkyl group ROR dash, dilute sulfuric acid hydrolyzes this bond, means it breaks this bond. So, H and a OH. So, we get alcohol plus R dash OH. But condition, it should be primary. If you take dimethyl ether, you will get methyl alcohol. If you take ethyl methyl ether, you will get methyl alcohol and a ethyl alcohol. If you take concentrated sulfuric acid, you will get alcohol. One part will give you alcohol, and in another part you will get, here you see the bond breaks like this, H O SO3H. I can write a sulfuric acid like this. So, this from this part alcohol is formed, and from this part alkyl hydrogen sulfate ROSO3H formation होता है. If you take secondary or tertiary, if R is secondary or tertiary, you know secondary or tertiary means you will not get alcohol. पहले तो alcohol ही मिल जाएगा, लेकिन alcohol बाद में alkene formation कर देगी. You just see, if you take here, if you take this type of ether, isopropyl ethyl isopropyl ether, and you treat with a concentrated sulfuric acid, you will get, this will give you alcohol in first part, then it will undergo elimination, it will give you alkene, plus that part you will get a alcohol, because it is more stable. So, ये रहा इसका limitations. Next you can react with when ether you can react it with PCl5, again the bond between carbon and oxygen clips. Very important, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था. when देखो मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ, ROR PCl5 को कैसे लिखोगे, PCl5 मतलब it has 5 chlorine groups, so here you have Cl, now write PCl3, ठीक है. So, one R combines with the Cl, this R combines with the Cl, so it means bond between O and R breaks, here also bond between O and breaks, you get RCl, suppose you take R dash, RCl plus R dash Cl plus POCl3, ये बहुत ही सिंपल तरीका है याद रखने के लिए. So, with this reaction we see the bond between carbon and oxygen also breaks, ठीक. Another important, most important is the breaking of a carbon and oxygen bond by concentrated HI. Very very important. मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. उसको ध्यान से सुनना और समझना भी बेहद जरूरी है. देखो, अगर मैंने लिया ROR डैश, HI डाल दिया, पहले मैं सिंपल इथर लेता हूं, तो HI O और R के बीच में बॉन्ड टूटेगा, H और I, तो यू विल गेट अल्कोहल
plus alkyl iodide. When ether is treated with HI, we get mixture of alcohol and a alkyl iodide. ये तो मिलना तय है, लेकिन अल्कोहल किससे मिलेगी और आयोडाइड और अल्किल आयोडाइड किससे मिलेगी, ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखो मैं कुछ रूल्स बताता हूँ। सपोज अगर दोनों में और सिंपल ईथर में कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशानी और प्रॉब्लम होती है मिक्स्ड ईथर से। देखो अगर हमारे पास CH3OC2H5, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ। HI के साथ दिया, रिएक्शन किया तो क्या होगा, हीट, उसको ड्रास्टिक कंडीशन की जरूरत है। तो याद रखो जो छोटा सा अल्किल ग्रुप है वो हमेशा आयोडाइड के साथ मिलेगी, वो आयोडाइड ही बनाएगी, छोटा सा ग्रुप आयोडाइड ही बनाएगी। जैसे मिथाइल आयोडाइड प्लस इथाइल अल्कोहल, ये रहा पहला पार्ट। अगर ये रहा तुम्हारा प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। देखो प्राइमरी में छोटा ग्रुप होगा तो ये आयोडाइड बनाएगा, ये भी प्राइमरी। अगर ये सेकेंडरी हो गया तो CH3O, सपोज ये रहा सेकेंडरी तक, सेकेंडरी, यहां पे तुम्हारा मिथाइल भी रह सकता है, इथाइल भी रह सकता है, कोई बात नहीं। ये अगर सेकेंडरी हो गया तो HI के साथ रिएक्शन किया तो छोटा ग्रुप के साथ हमेशा आयोडाइड। इसी पार्ट को भी ध्यान रखना, इसी साइड में कौन है। अगर प्राइमरी है छोटा ग्रुप के साथ आयोडाइड, सेकेंडरी है तभी भी छोटा ग्रुप के साथ आयोडाइड ही रहेगा, तो मिथाइल आयोडाइड बनेगा और इथाइल आयोडाइड बनेगा, प्लस इसी साइड से अल्कोहल बनेगा, इसी साइड से अल्कोहल बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गड़बड़ी होगी तब अगर यहां पे तुम्हारा टॉर्सियरी आ गया, जैसे कि टॉर्सियरी ब्यूटाइली मिथाइल ईथर, अगर ये आ गया तो यहीं से गड़बड़ी शुरू होगी। क्या, ये इसी ग्रुप्स के साथ यहीं से बॉन्ड टूटेगा, यहां पे H और यहां पे I। टॉर्सियरी जो बड़ा ग्रुप है, टॉर्सियरी ग्रुप, अगर सेकेंडरी है तो अल्कोहल बनाए, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगी, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगी। अगर टॉर्सियरी आ गई वो अल्कोहल नहीं बनाएगी, वो क्या बनाएगी, तुम्हारा आयोडाइड। सो यहां बनेगा मिथाइल अल्कोहल प्लस टॉर्सियरी ब्यूटाइली आयोडाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मैकेनिज्म के पार्ट नहीं जा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं मैकेनिज्म पार्ट नहीं जा रहा हूं। अगर ये रहा तुम्हारा फिनाइली और ये अनिसोल की बात मैं कहूं, याद रखना जहां पे एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग के पास हमेशा ही OH बनेगा। एरोमेटिक रिंग ऑलवेज फॉर्म्स अल्कोहल, तो मतलब HI, यहाँ पे H, यहाँ पे I। ये छोटा हो या बड़ा हो या प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी, उसे कोई मतलब नहीं, ये बनेगा हमेशा अल्कोहल। एरोमेटिक पार्ट विल ऑलवेज मेक अल्कोहल, ये बात याद रखना। सो वी गेट फेनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। ये तुम्हारा प्राइमरी हो सेकेंडरी हो कोई मतलब नहीं। अगर इसमें तुम्हारा आ गया C6H5 जैसे बेंजील, ये अगर आ जाती है तो बात कुछ अलग होगी। जैसे अगर यहां पे HI मैंने डाल दिया तो इसी साइड में तुम्हारा आयोडीन लगेगी, तो यू विल गेट बेंजील आयोडाइड। बीच में CH2 आ जाती है तो ये आयोडाइड बनाएगी, ये अल्कोहल बनाएगी, C6H5 CH2I प्लस CH3OH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा देख लो, और कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो और दोबारा भी देखो, सुनो, देखो उसको, और मैंने क्या बताया। तो ये दोनों सिमिलर हो गए तो कोई बात नहीं, इफ दे आर सिमिलर यू विल गेट वन अल्कोहल एंड अनदर अल्किल आयोडाइड। डिसिमिलर होगा तब तो ये रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो अनिसोल की बात मैंने कहा, ये भी रहा रिएक्शन विथ एक्वस एंड अनहाइड्रस HI। ये कई बार एंट्रेंस में पूछा गया, तुम्हारा नीट JEE वगैरह इसमें सब पूछा गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन, और देखो जैसे कि टॉर्सियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टॉर्सियरी ब्यूटाइल
methyl ether with tertiary butyl methyl ether when it reacts with the anhydrous HI and when it is treated with the aqueous HI, what are the products? Very important. Now, when it is treated with the anhydrous HI, so it will give you alcohol. So, it will give you CH3 whole 3C OH plus CH3I. When it is treated with the aqueous HI, it gives you this one, tertiary butyl iodide, and your methyl alcohol. If I write some mechanism here to explain, कभी कभी mechanism की ज़रूरत है लेकिन examination point of view से ज़रूरत नहीं है. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो देखो C ये रहा tertiary, ये तीनों CH3 मान लो, ये रहा O, ये रहा CH3. यहाँ पे अगर मैंने H+ मीन्स HI से dissociation हो गए H+I- दिया. तो oxygen has a 2 lone pair of electron, it accept that H+. So C ये रहा O plus H CH3. अब बात है कि बॉन्ड कहाँ से टूटेगा. अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो ये टर्शियरी अल्किन, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल. अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो प्राइमरी. आप जानते हैं कि तुम्हारा अगर यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो इफ बॉन्ड ब्रेक्स इन दिस वे यू विल गेट ए टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल. But here you have anhydrous HI, that means it will not be stabilized because medium does not contain any solvent. So, bond will rather break from this side. So, you will get this is alcohol plus methyl carbocation. Methyl carbocation next combines with the iodide, it gives you methyl iodide. But when same is treated is in aqueous HI, so bond breaks here because the tertiary carbocation is stabilized in a polar solvent because it contains water, polar solvent. So carbocation will be stabilized. It will get extra stabilization by this hydration. So bond will break in this way and you will get methyl alcohol, right. So it is now combines with iodide, give you tertiary butyl iodide as the product. So this is the beauty of the reaction. You see, aqueous HI and anhydrous HI can give you two different products. Okay. Next is we'll go to discuss about the last part of the today's discussion, that is your aromatic ether and that is your anisole. So anisole, let me tell some facts about anisole. Anisole और फेनॉल दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे तो दिस इज योर अनिसोल एंड दिस इज योर फेनॉल. व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज फेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन अनिसोल. व्हाई? ऑल्दो इट कंटेन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी कह सकता है कि सर ये तो मिथाइल प्लस आई इफेक्ट, it will show plus effect, so electron density on oxygen will increase, so resonance यहाँ पे ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है because ये जो मिथाइल ग्रुप it causes steric effect. ये जो 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन p orbital. This is p orbital. So if 2 electrons are present in a p orbital, then it participates in a resonance. Because of a steric effect, it pushes the p orbital away from the plane. That is why it is does not remain on the same plane with aromatic ring. ये बात याद रखना. That is why resonance is affected here, but here H is a smaller group and the lone pair of electron which is present in a p orbital easily participates in a resonance, no problem. So therefore it is more reactive than this one.
How will you prepare? So it is preparation. Let us discuss about preparation. How will you prepare anisole from phenol? Phenol is acidic. So it reacts with a strong base. It cannot react with the sodium bicarbonate because it is not that acidic. So it gives you sodium phenoxide, right? So we get sodium phenoxide. Sodium phenoxide. When sodium phenoxide is treated with the methyl bromide or methyl iodide you can take, then sodium iodide is eliminated, we get anisole. You cannot reverse the reaction. You cannot, if someone says, if I take methyl sodium methoxide, then I react with the ब्रोमोबेंजीन, तो बात तो वही बनती है. ऐसा नहीं होगा बिकॉज aryl halides are less reactive and they are almost inert. ये रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है. So this reaction only takes place. This is the method of preparation. You can prepare it from phenol or from sodium phenoxide. You cannot prepare it from any sodium methoxide. Reverse is not possible. Remember this one. कभी ये गलत मत करना. ये गलतियां कभी मत करना कि you take aryl halide react with sodium alkoxide. विलियमसन सिंथेसिस में मैं पहले ही बता चुका हूँ. ये विलियमसन सिंथेसिस है. ठीक है. And a second thing is it is less reactive than phenol because of a steric effect caused by methyl group which pushes the electron pair present on the p orbital away from the plane and restricts the resonance. Also another reason for its less reactivity, but less reactiveness is resonance. When resonance takes place, in both cases resonance takes place. In a resonating structure of a phenol, you see, just here I am writing the one resonant structure of a phenol OH. You have 2 lone pair of electrons. Just I am writing only one resonant structure. Remaining resonant structures you know well. So double bond O plus H. Similarly, resonance also takes place in anisole. Here you have 2 lone pair of electrons. Okay. So the remaining resonant structures you can draw easily O plus H. Thing is that there are 5 resonant structures possible, in which in 3 resonant structures you see there are positive charge on oxygen atoms. Here also positive charge on oxygen atoms. Here you have CH3 group. Thing is that the positive charge on oxygen makes it unstable because positive negative is there. So it can easily remove the hydrogen as H plus ion, takes the 2 electrons and stabilize itself. मतलब O के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने आप को बैलेंस और न्यूट्रलाइज कर सकती है by taking the 2 electrons of हाइड्रोजन, बिकॉज छोटा सा बच्चा है. ठीक है. उसको मार के भगा सकता है. लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप छोड़ के जाने वाला नहीं है, तो इट विल रिमेन आज पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन. दैट इज इट इज अनस्टेबल. सो इट इज लेस रिएक्टिव. ठीक है. कुछ भी हो लेकिन ये तो रिएक्टिव है. फेनॉल और ये जो OCH3 दोनों का नेचर से एक ही है. दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, लेकिन OCH3 थोड़ा सा लेस एक्टिवेटिंग, OH group is more activating. Therefore, it shows aromatic substitution reactions as phenol shows, like your bromination or halogenation, nitration and Friedel-Crafts alkylation and acylations. Like this, you see, when anisole is treated with the bromine, anisole treated with the bromine in acetic acid, you get, it is orthoparadirecting. So we get orthobromo anisole plus parabromo anisole, mixture of ortho and a para bromo anisole, but parabromo anisole is major because of a steric effect. Large group, so it cannot when it is present in ortho position causes steric effect, therefore it is minor and this is major. So this is orthobromo and this is parabromo anisole. Similarly, when it is treated with it undergoes nitration on reaction with concentrated nitric acid
and a concentrated sulfuric acid. This is a nitrating mixture, you know well, it generates a nitronium electrophile, and that also gets attached at ortho position and a para positions respectively, giving you the mixture of two products in which you can now say which is major, because this is also bulky group. It does not form any kinds of a hydrogen bonding or a ring structure, so that this is a major, para nitro, anisole is a major, ortho nitro is your, this is ortho, this is para, or it is minor, right. It does not show any sulfonation, because sulfuric acid act as acid, it act as base, it rather forms salt and a more deactivating. So, therefore, it does not show sulfonation, it shows Friedel-Crafts. Alkylation with the alkyl halide, methyl bromide in presence of a Lewis acid, you can take ferric bromide. Similarly, it produces your mixture of ortho and a para product. Mixture of ortho and a para product, in which the para product dominates. So, this is major and this is minor. Similarly, when it is called Friedel-Crafts alkylation, similarly on reaction with the acid chloride in presence of anhydrous aluminum chloride, it will produce orthomethoxyacetophenone, and a para methoxy acetophenone. Obvious, this is obvious reason that this is the major and this will be minor. So far as the CHEC examination is concerned, this no question has been asked from this section, but the possibility cannot be ruled out. कभी पूछा नहीं गया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आगे नहीं पूछा जाएगा. ये रहा तुम्हारा anisole की कुछ important chemical properties. These reactions are given in your CHEC syllabus. There are so many other reactions. I am not touching upon those reactions. ये तुमको ज़्यादा भारी हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, बस सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दो. It shows electrophilic substitution reactions like phenol, but reactivity is less, and it is that OCH3 group is also ortho para activating group, but it cannot activate as much as OH group in phenol does. So, it produces mixture of ortho and para. Because of a large size, steric effect is caused, and because of that reason always para isomer dominates over ortho isomers. So, what are the important questions? Let me discuss here. So, the questions that are likely to come in the examinations are that has been asked in examinations, CHEC examinations are your Williamson synthesis. Write short note on Williamson synthesis. अगर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया तो पूरी बात लिखनी. तो what is Williamson synthesis and its limitations. कुछ एग्जाम्पल भी देना, limitations भी लिखना. और फंक्शनल आइसोमर के ऊपर भी क्वेश्चन भी पूछा गया था. व्हाट आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ योर डाइइथाइल ईथर और डाइइथाइल ईथर, यस, एंड व्हाट आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल ईथर, व्हाट आर द मेटामर्स ऑफ डाइइथाइल ईथर्स, ये भी पूछा गया है. ठीक है. और भी ये भी क्वेश्चन भी आ सकते हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन अल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड and alkyl halide is treated with the moist silver oxide. ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. Same alkyl halide on reaction with the moist silver oxide gives you alcohol. Alkyl halide on reaction with the dry silver oxide give you ether. ये बात याद रखना. So, let us have summary of today's discussion. We discussed ether, the class of organic compounds having 2 similar or dissimilar alkyl groups or aryl groups. Classification, we classified them as simple, means contain 2 similar groups, mixed dissimilar groups, cyclic or crown ethers.
Then we did nomenclature. It has common name alkyl, alkyl ether or dialkyl ether भी हो सकती है. Or isomerism, it shows functional isomerism and metamerism. Preparation from Williamson synthesis, from alkyl halide, from alcohols, and physical properties and a chemical properties also we discussed. So, in chemical property most important was your reaction with the concentrated HI. The bond breaks between a carbon and a that oxygen. This reaction is very important, and I hope you must have enjoyed the class. The concept become very clear, and whatever are required for your CHS examinations, I have discussed everything in detail. मुझे पूरा उम्मीद है कि इसी चैप्टर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आएगी एग्जामिनेशन में, इट विल बी यू विल फाइंड वेरी इजी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशान नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, so thank you all for watching and attending the class till the end. Thank you very much.